it's hard being a woman today, right? Yes. काम भी करना है. हाँ. And I'm posing this question to you that you have to work, and you're married, and you also have a family life. माँ बाप भी हैं, husband भी है, काम भी है. All that balance. Then there's the social media demand for content, and fans bhi hain, and there's this image to keep up. A lot is compromised in that balance. A lot. So yes. how do you now, you seem so calm and so, collected and so like zen. Is that because I practice Zen? That's what I was going to say. Lifestyle. What do you do to maintain that kind of calm in your life now? Because not everybody is getting it. It's going to sound so cliche. Oh, but it's because I do pranayams and I breathe and I meditate. And that is the only thing that keeps you grounded, centered, and keeps my mental health in check. So this is something that apne haath mein hai. This is what you can do. What you can do. Yeah. नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज डर की वजह से भी पढ़ती हूँ ना. हाँ. कि नहीं पढ़ूंगी तो ये होगा, वो होगा. ठीक है. So there is an element of fear. फर्ज भी है ना. फर्ज भी. तो वो एक अलग है. ठीक है. लेकिन what do I have control of जो मुझे force नहीं किया गया, या मुझे जबरदस्ती force गलत हुआ, that I don't have to do. But I choose to do it because there are no consequences. Yeah. And that is meditation. And it really is the only thing that helps you connect with yourself. No disturbance? How many minutes or hours a day? That doesn't matter. Doesn't matter. Till I am feeling that feeling of like enjoying that feeling of centeredness and calmness, मैं वहीं बैठी रहती हूँ. जिस तरह रमजान के आखिरी रोजे में 10 रोजों में जो दुआ का टाइम होता है, ठीक है, वैसे तो आप नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, लेकिन you're not totally focused because आपने बस जल्दी से नमाज पढ़नी है, जल्दी से ये करना, वो करना, 1000 काम, बस ये फर्ज निभाना है. ठीक है. लेकिन आपके जो लास्ट नाइट्स ऑफ रमजान है, वो आप सेल्फिशली करते हो कि मेरी दुआ आज तो कबूल होगी, क्योंकि मैं शायद यही कबूलियत का वक्त है. लैलतुल कदर नाइट को मैं पकड़ूंगी. अब वो आपने एक बना दिया, ऑल्टरनेट बना दिया, जो भी आपकी मर्जी, आपने पूरे 10 करने, ऑल्टरनेट जो भी. ठीक है. But that dua at that time, or when you go for umrah, or like, when you have really zoned out of everything, और आप बस वो एक focus से वो दुआ कर रहे होते हो. आपको किसी चीज की जल्दी नहीं है, किसी चीज का वो एजेंडा नहीं है, कोई परवाह नहीं है. आप, this is your time. शायद लोगों को हर रात अपनी ईशा नमाज के बाद मिलती है, शायद that's amazing. मुझे नहीं मिलता वो. तो मुझे लेकिन सुबह छत पे या गार्डन में बाहर वो टाइम मिलता है. अगर 5 मिनट का भी है, 10 मिनट का है, जब बहुत टाइम है तो 20 मिनट का भी. बट एक तो हम सांस सही से नहीं लेते ना, हम कॉन्शियसली सांस नहीं लेते. जिस तरह हम ब्लिंक करते हैं ना, हम सांस लेते हैं. कोई लोग जब इनहेल करते हैं तो मुंह से करते रहते हैं, इनहेल एक्सहेल, वो थ्रोट ड्राई हो जाता है. इट जस्ट अफेक्ट्स यू. यू आर सपोज्ड टू रियली ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम ऑल दैट. फिर वो पेट, आप जब इनहेल करते हो तो योर पेट इज सपोज्ड टू फूल लाइक अ balloon, and then you exhale. A lot of people take the stomach in when they inhale, and that causes a lot of imbalance in their health and their एक जैसे एक जिस्म में करंट दौड़ती है जो आपको इस तरह रखती है, क्योंकि आपकी सांस ऑफ है. The moment you connect to the breath, and I used to think, please क्या breath भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, बहुत बोरिंग है. But I can proudly say that because Mohib and I both practice that, because we practice that, that's the only thing I can tell my friends who are struggling with patience, struggling with anxiety, struggling with sleep, struggling with weight, struggling with depression, anything. मैं कहती हूँ यहाँ अल्लाह की कसम सांस लेना सीखो सही से. 5 मिनट, 10 मिनट, होल्ड योर ब्रेथ. अच्छा, फास्टिंग आपके बॉडी के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि हम आम जिंदगी में अपने रूटीन में चलते हैं, घर साफ रहता है, सब कुछ सही रहता है. हमें जब छुट्टी का दिन मिलता है तो हम डीप क्लीनिंग करते हैं, इस कमरे की, उस अलमारी की, ये. ठीक है. फास्टिंग जो आपको एक मौका देता है खाली पेट रहने का, तो आपका जो जिस्म है, इट डजंट फोकस ऑन डाइजेस्टिंग ओनली. कहता है 1 सेकंड, लिवर, इस कमरे में लिवर में कुछ है, गुर्दे में कुछ है, इधर कुछ है, वो उसको बैलेंस कर देता है. And that is the beauty of fasting. ये अलग बात है कि हम सहरी और इफ्तारी में क्या खाते हैं, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो अलग बात है. लेकिन जिस वजह से फास्टिंग आपके लिए अच्छा है, वो इसीलिए because you get to spring clean. Same thing in breathing. When you exhale
and you hold your breath on an exhale, you're starving your body of oxygen, and the body just gets into action and starts supplying a lot of blood and then saving all that oxygen that was left in your body to work on your cells. It literally just, it's life changing. Yeah. And thanks to social media, there's so many videos on YouTube and social media that will help train you, teach you, guide you. Yeah. Whether you do the Indian teachers or you do the new age, hippie teachers, or you do whatever, it is really a magical experience. And I think this is something that next time I go for field work, and I've been telling my friend Sana over there, the British Asian Trust, is that how do we incorporate yoga? To aap bhul jaye, yoga we can't, but breathing and meditation. Namaz bhi to ek meditation hai. Of course. Namaz ka pura jo cycle hai, it's a meditative state. But it's a beautiful thing when you know exactly what you're saying. Yeah. And what you're thinking and feeling. Of course. And that you zone out. Namaz mein you can't zone out. Na? Kabhi kabhi aap bhul jate ho which surah was I on, and then you have to really be, that's a different kind of focus. But there's a different kind of liberation to jab aap, इसीलिए मैं ज़्यादा काम और zen रहती हूँ, क्योंकि मैं इस पे बहुत काम करती हूँ पिछले 2 साल से सिर्फ, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ा है. दूसरा ये, again, my tarbiyat at home, I was never a girly girl because my mother wasn't a girly girl. मुझे कभी उस तरह groom नहीं किया गया था. मुझे हमेशा था to be independent, to take care of yourself, to be alert and aware कि आपके around क्या हो रहा है, आपने बाजार में जाना, आपने कैसे जाना है, not ने आपके बाजार में जाके कौन सा लेस खरीदना है ताकि आप अपने बात पक्की पे कैसी लगेंगी. You know, it was like practical stuff, like know how to change a tire, know how to like change a bulb, don't be a damsel in distress. You know, you have to be independent like that, self-sufficient. And I think in उन चीज़ों की वजह से मैं दूसरी चीज़ों को ज़्यादा attention नहीं देती, या मुझे important नहीं लगती ना. Everyone is raised differently and has their own opinions about different things. So I mean I don't have a million followers. Yeah. You know, in one world that would be lame. Like, but that's which okay. world But are that you doesn't living in? bother you, which is the best part. Yeah. No, I mean it was amazing. My sister was like, "Oh my God, you need to do." You know, if social media was in my time, and I'm sure a lot of us say this, मैं जितनी joker थी, yeah. मैं जितनी joker थी, my whole life, बचपन, school, teachers will always remember me as the joker. And there's so much stuff that I've done, and my sister was like, if people saw, and then that video came out with the accents. That was just a glimpse of like whatever. Yeah. ठीक है? I got like, I don't know how many thousands of followers suddenly, and my sister's like, see, you need to just be you. You're so caught up now in like always being this poised. Don't. And I was like, but that's for my friends. Yeah. And you guys. Yeah. That's not for the public. But I'm just saying, if I were to suddenly then yes, it's like give a little bit of yourself to the public for them to want to know what you're doing next or what video you've put out.